LTPP messages, L2TP messages, जो कि ये mentioned है. So let's see how to configure it. यहाँ पे हमें एक pool बनाना पड़ता है राउटर में, and this is the pool out of which the PC will get an IP. अब PC के पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और एक PC के पास डायलर है, टनल डायलर. तो आपकी जो VPN गेटवे है, इसने बेसिकली इंटरनेट के साथ तो आपका निक कनेक्ट है ना, तो इस गेटवे ने बेसिकली इस डायलर को आईपी असाइन करना है. तो ये जो आईपी असाइन करना है, ये कौन से पूल से असाइन करना है, वो हम अपनी इस VPN गेटवे के अंदर पूल डिफाइन कर रहे हैं, आईपी लोकल पूल. एंड वी कैन सी कि हमारी जो राउटिंग प्लान है उसमें क्या पूल है जो हम डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद AAA न्यू मॉडल, AAA ऑथेंटिकेशन, PPP डिफॉल्ट लोकल. एनीबॉडी हु ट्राइज टू कम्युनिकेट विद VPN गेटवे यूजिंग PPP, तो आपको पता है PPP में PAP और CHAP के ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स हैं. सो यूजिंग देम वी विल ऑथेंटिकेट द पर्सन. यूजर नेम L2TP पासवर्ड सिस्को, ये वो यूजर नेम और पासवर्ड है जो इस डायलर को यूज करना है. दिस डायलर will use the username and password that is configured on VPN gateway to get authenticated, and after that IP will be assigned. तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो हमारी ऑथेंटिकेशन और IP एड्रेस असाइनमेंट की है. I see there is a command which is missing. Let me fix it. So here we have AAA authorization network default local. So based upon this command, actually you will be able to get an IP address. So AAA authorization network default local, ये ऑथेंटिकेशन कहाँ से करानी है, लोकल से करानी है. ऑथराइजेशन कहाँ से करानी है, यानी आईपी साइन कहाँ से करना है, लोकली करना है. तो इस वजह से आईपी साइन होता है, इस वजह से यूजर नेम वेरीफाई होता है. ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट है, दैट इज अबाउट एनेबलिंग एलएनएस. ये एलएनएस की कॉन्फ़िगरेशन है. VPDN enable, this turns on virtual private dial-up network service in the router. VPDN group 1, we are configuring a profile of VPDN, accept dial-in, यानी कि incoming connections accept करो, protocol L2TP के, and you will use an interface on VPN gateway which is known as a virtual interface, kind of a tunnel interface, जिसमें हम GRE का बनाते हैं, but this time it is known as virtual template. तो हम यहाँ पे एक virtual template 1 interface create करेंगे, which you can see here, interface virtual template 1. तो हम कह रहे हैं कि जितने भी VPDN के पैकेट्स आएंगे वो virtual template 1 के जरिए एनकैप डीएनकैप होंगे. नो L2TP टनल ऑथेंटिकेशन, यानी टनल की इटसेल्फ जो की है वो हम नहीं लगाना चाह रहे, बिकॉज वी हैव यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन. So once this configuration is done, then we enter into interface virtual template 1. With this command we configure interface virtual template. ये इससे पहले होता नहीं है, ये बनता है इस मौके पे. IP unnumbered, और यहाँ पर आप अपना फिजिकल इंटरफेस बताएंगे, यानी आपकी VPN गेटवे का जो इंटरफेस इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, तो आप इसका IP उसके इक्वल कर रहे हैं. यू आर equalizing the IP addresses. I hope you understand the unnumbered command. This is from your
routing switching background. So we are not assigning any IP on this tunnel interface. Instead, its IP is equivalent to gigabit 0/0. Peer default IP address pool, remote access pool. Anybody who passes authentication and needs an IP, we will give IP from remote access pool. And people need to authenticate, and their PPP authentication mechanism will be CHAP. We will use CHAP to authenticate them. So once this configuration is done on your VPN gateway, which is Cisco router, it is ready for accepting L2TP tunnels and encap and de-encap process. अच्छा, इसके अंदर जो routing है that is automatic. You have no need to configure any route. आप देखेंगे routes will automatically be configured. We will see that shortly. इसके बाद आपको इन कॉन्फ़िगरेशंस के बाद आपको अपने डायलर को कॉन्फ़िगर करना है. सो हाउ डू यू कॉन्फ़िगर डायलर? आप विंडोज की मशीन में आ जाएंगे. You have to go to network and sharing center. Here you have an option set up a new network. उसके बाद ऑप्शन आती है connect to a workplace. उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस कनेक्शन को एज अ VPN कॉन्फ़िगर करना है या डायल करना है मॉडेम के थ्रू. तो ये तो अब दौर नहीं रहा मॉडेम वाला कि हम कोई फ़ोन नंबर डायल करें. This is just a VPN connection. We will select this. After that, we will put an internet address. This address is going to be the live IP of VPN gateway. You can name it accordingly. Username और password देंगे और ये connect करने की कोशिश करेगा. Initially connect नहीं होगा. You can say set up the connection anyway. Connection setup हो जाएगा. Once the connection is set up, you will be able to see a LAN card appearing in your PC with the name VPDN, क्योंकि आपने यहाँ पे name VPDN दिया है. आप जो भी नाम यहाँ देंगे उस नाम से appear हो जाएगा. Then what you have to do is actually go to the properties of that adapter. उस adapter की properties में आएंगे और यहाँ security settings में जाएंगे. We will go into security settings. यहाँ से हम select करेंगे L2TP tunneling protocol with IPsec. Although we are not going to use IPsec, but the only option is L2TP over IPsec. हम इसे select करेंगे. Allow these protocols की जो option आ रही है इसमें से हम uncheck कर देंगे Microsoft CHAP version 2. We will not use this one. Only check challenge handshake protocol. Within security encryption में हम कह देंगे no encryption. Require encryption वाले जो ऑप्शन है वो IPsec के इस्तेमाल की तरफ चले जाएंगे, but we do not want IPsec, so हम कहेंगे no encryption. So this way the tunnel will be plain L2TP. उसके बाद जब आप यूजर नेम और पासवर्ड देकर कनेक्ट करेंगे तो आपका ये जो कनेक्शन है that will show up as connected or you will be able to access the network behind your VPN gateway. तो आइए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और before we configure this, let's refer to the base diagram. हमारी जो lab topology है so this is the lab topology we have. इसमें हम कर ये सकते हैं कि हमारे पास ये जो ISP है इसके साथ एक सिमुलेटेड इंटरनेट क्लाउड है जिसके ऊपर वी हैव अ विंडोज मशीन एंड दिस विंडोज मशीन इज हैविंग कनेक्टिविटी. ऑब्वियसली हम यहाँ पैट नहीं कर रहे. यू कैन सी काइंड ऑफ लाइव IP. अदरवाइज हम यहाँ पैट कर भी सकते थे इसको.
बट हम इसको प्लेन इंटरनेट पे लाए हुए हैं। और इस मशीन ने बेसिकली इस राउटर के साथ L2TP डायल करनी है। एंड वंस द VPN कनेक्ट्स, तो इसके ऊपर जो डायलर इंटरफेस है उसके ऊपर आईपी एड्रेस मिल जाएगा 192.168.10.x सबनेट में से। ये वही सबनेट है जो हमने वहां पूल की शक्ल में बनाया है। इस डायलर को मिलेगा वो आईपी, और इस डायलर से आप कम्युनिकेट करेंगे इस लूप बैक के साथ। दिस लूप बैक इज अ सिमुलेटेड LAN behind this VPN gateway. So basically 192.168.1.1 will talk to this IP through this tunnel, and whenever it is not required हम उसको फिर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सिनेरियो क्लियर? चलिए जी इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। So this is what we have to configure on router 1. इसको हम पहले नोटपैड में बना लेते हैं। This thing is going to be gigabit 0/0. ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो हम अपने R1 में करने जा रहे हैं। सो हमने पूल बना दिया, AAA न्यू मॉडल ऑन करके ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन एनेबल कर दी, यूजर नेम क्रिएट कर दिया, VPDN का सेक्शन कॉन्फ़िगर हो गया, उसको वर्चुअल टेम्पलेट 1 के साथ मैप किया। दिस इज द लॉजिकल इंटरफेस विच वी क्रिएटेड। इसको हम आगे भी यूज करेंगे फ्लेक्स VPN में। IP अननंबर्ड हमने इसको गीगाबिट 0/0 के साथ कर दिया। IP एड्रेस असाइनमेंट इस पूल में से होगी और ऑथेंटिकेशन PPP में चैप के जरिए होगी। Show IP interface brief. You can see that there is an interface called virtual template and its IP is also 61.111. Strange, राउटर तो एक ही सबनेट के दो IP अलाउ नहीं करता, यहाँ पर तो दो एक जैसे IP नजर आ रहे हैं हूबहू। तो ये अननंबर्ड कमांड की वजह से है। This interface virtual template IP अननंबर्ड गीगाबिट 00 की वजह से कि इसका IP इज इक्विवेलेंट टू गीगाबिट 00। अच्छा जी, लेट्स गो टू दिस थिंग इज डन। अब हम आ रहे हैं PC की तरफ एंड वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस डायलर इंटरफेस। सो दिस इज द PC। इससे पहले कि हम कॉन्फ़िगरेशन इसमें करें, हम पिंग करते हैं 61.111 को। सो आई एम चेकिंग माय ऑफिस VPN गेटवे। हम अपने घर से अपने ऑफिस की VPN गेटवे को चेक कर रहे हैं कि उससे रिप्लाई आ रहा है 61.111। This is the IP of my remote VPN gateway.
So because I have internet connectivity, through this internet connectivity I am able to ping my office VPN gateway. But before making any VPN, can I ping my office LAN? I should not be able to. I am not able to ping my office LAN since the VPN is not there. अब मुझे अपने इस पीसी में VPN कनेक्शन सेटअप करना है. So I will go to Open Network and Connection Sharing Center. इधर से मैं सेटअप न्यू कनेक्शन कहूँगा. Connect to a workplace. Next, I will use VPN. I do not want to set up any internet connection. I will set up an internet connection later. यहाँ IP दूंगा अपने VPN gateway का, and I can name it Office VPN. Next, username, password ये वही है जो हमने वहाँ create किया है. So once we are done with the wizard, you are able to see a dialer in your adapters. इसकी properties में जाएंगे, security में जाएंगे. Type of VPN is automatic. We want it to use L2TP over IPsec. For encryption at the moment we will say no encryption. और हम MS chat version 2 ऑफ कर देंगे. इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करके कनेक्ट करते हैं. आई एम गिविंग द पासवर्ड. बिफोर आई प्रेस कनेक्ट हम अपने राउटर में आते हैं और लिखते हैं शो IP रूट. ये हमारा राउटिंग टेबल है बिफोर एनीबॉडी कनेक्टेड. अब हम कनेक्ट करते हैं इसे. We are connected, and as we got connected with the Office VPN, we are able to ping the LAN. यानी अब ये डायलर बात कर सक रहा है इस लूप बैक इंटरफेस के साथ. शो IP route. Here you can see a directly connected route which was not there before. 192.168.10.2 is directly connected to virtual access 2.1. This is a virtual interface where your VPN endpoint is considered connected. This 10.2 is the IP address of this Office VPN. (61.111) is the server जिससे हमें IP मिला है 10.2. चैप के जरिए हम ऑथेंटिकेट हुए. हमारा जो फिजिकल IP है दैट इज 67.113 जो हमारा पब्लिक IP है. So actually 67.113 is talking to 61.111. यहाँ पर अगर हम लूप बैक 1 को शट डाउन कर दें, we are not able to ping the LAN anymore because हमने अपने इस LAN इंटरफेस को किल कर दिया. Remote users are not able to communicate with it. We are able to ping now. और अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 192.168.10.2 को सोर्स में 192.168.1.1 को रख के तो भी मैं पिंग कर सकता हूँ. So this is two way.
आप ऑफिस से बैठ के इस मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये मशीन अपने घर से ऑफिस के सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। अब इस मशीन के ऊपर अगर आप कोई आईपी फ़ोन इंस्टॉल कर लें, कोई ऑफिस की टेलीफोनी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, तो वो भी रजिस्टर हो जाएगी, बिकॉज आपकी जो कनेक्टिविटी है वो तो हो गई है ऑफिस के साथ। नाउ यू जस्ट नीड अ सॉफ्ट फोन ऑन इट, and this is a teleworker solution which is much needed these days under lockdown. Although this is not secure, this is unsecure at the moment because we are just doing tunneling. प्राइवेसी आ जाएगी तो फिर ये एक परफेक्ट टेलीवर्कर सॉल्यूशन बन जाएगा. So we are done with a feeler of remote access tunneling.